सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे एक और नई स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे हमारे पास में सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ड्राइवर चिल्ड्रंस। क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलने वाला है, लास्ट डेट कब है, सब कुछ A to Z कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लीजिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। राइट, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें विजिबल हो। और जो पोर्टल है उसका लिंक मैंने आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाके डायरेक्टली आप इस पोर्टल पे पहुँच जाओगे। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो जो स्कॉलरशिप का नाम है मैंने आपको बता ही दिया, सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ड्राइवर चिल्ड्रंस। अब बात करते हैं अबाउट प्रोग्राम के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो महिंद्रा फाइनेंसेस की तरफ से आ रहा है। नाउ अब बात करते हैं किन किन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो बेसिकली अगर आप 9 से लेकर 12th क्लास के तक के स्टूडेंट हो तो आपको ये स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल हो। साथ ही में अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हो। वहीं अगर आप क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट हो तो एलिजिबल हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी एलिजिबल हो। लेकिन एक और बात, आपका जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला होना ज़रूरी है। अगर आप इन 4 स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट से आते हो तो आप इसके लिए अंदर एलिजिबल नहीं हो। अगर हम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप व्यू डिटेल पे जाके एक एक को चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए चेक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। जो भी आपका क्लास एंड जो भी आपकी स्कूलिंग हो रही है या कॉलेज हो रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है उसी अकॉर्डिंगली। तो देखो, सबसे पहला तो है कि इन 4 स्टेट से ही आप बिलोंग होना ज़रूरी है। दूसरी अगर हम बात करें तो आप जो है जनरल या प्रोफेशनल दोनों डिग्री कोर्सेज से आ सकते हो, जिसके अंदर ITI, जनरल, डिप्लोमा वगैरह बात करें, पॉलिटेक्निक कोर्सेज की बात करें, या BSc वगैरह, BCom वगैरह जैसे जनरल डिग्री कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज लाइक BTech हो गया, MBBS हो गया, LLB हो गया, ऐसे कोर्सेज से आप परस्यू कर रहे हो तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। राइट, अगर हम बात करें तो आपके पास जो प्रीवियस क्लास है आपकी, लाइक आप ग्रेजुएशन के अंदर हो तो पिछले क्लास के अंदर आपके मिनिमम 60% मार्क्स जो है होने ज़रूरी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये उन स्टूडेंट्स को दी जा रही है जिनके पेरेंट्स जो है लाइक ओला, उबर, स्कूल बस या मिनी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर ड्राइवर है, तो उनके लिए और उनके पास एक वैलिड सर्टिफाइड लाइसेंस है, तो वो उनके जो चिल्ड्रंस हैं, ड्राइवर्स जो हैं उनके चिल्ड्रंस बेसिकली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली इनकम, अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली इनकम जो है 4 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होने ज़रूरी है। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फैमिली के अंदर मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स को ये एलिजिबल स्कॉलरशिप जो है मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। और इसी तरीके से कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट का डिटेल की बात कर लेते हो। तो अगर स्कॉलरशिप अमाउंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आप क्लास 9 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हो तो आपको 8,000 रुपये मिलने वाले एक साल के लिए। वही अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हर एक का यहाँ पे बेसिकली लिख रखा है कि 11th 12th के स्टूडेंट्स हो तो 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। एंड वहीं अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, जो ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज के अंदर आते हैं, तो आपको 15,000 तक के स्कॉलरशिप अमाउंट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप क्लास 1 से लेके 8 तक के स्टूडेंट हो, राइट, तो उसके अंदर आपको 5,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट देखने को मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 20,000 तक का अमाउंट देखने को मिलेगा। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस की बात करें तो आप जाके हर एक का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चेक कर सकते हो। पोर्टल पे जाके चेकआउट करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं या सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, लाइक आपका क्वालिफिकेशन मार्कशीट हो गई, आपकी फोटो आइडेंटिटी होगी, आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बैंक डिटेल हो गया, कॉमर्शियल लाइसेंस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें कैसे क्या अप्लाई करना है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो आप उसे एक बार जरूर से चेकआउट करो। और साथ ही में महिंद्रा फाइनेंसेस की तरफ से आने वाली स्कॉलरशिप के जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है, जो हमारे पास में जो महिंद्रा फाइनेंसेस है, उनकी तरफ से आने वाले एक पर्सन ने हमारे साथ वेबिनार किया, तो उनका भी एक पॉजिटिव मैसेज आप देख सकते हो इस वीडियो के एंड में। फिलहाल आप जानो कि किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने वाले हो। राइट, स्कॉलरशिप, क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन. After clicking on the apply now button, this section will open in front of you, and this section will open in front of you. After this, I'm taking you to the already filled test ID of mine. This is how the application form will look like. This application form is divided into majorly 4 to 5 sections. One is the student's personal detail. Another one is the education details, family member, document, and then there is a section of bank detail and more about yourself. So one by one, I'll go to the section wise details here. In the student's personal details section, the major fields which are being asked here is the first name, last name, your Aadhaar card number for the uniqueness of the application number, annual family income, your parental status here, the disability status, and alternate number and the WhatsApp number. If in case you have the same number, the registered mobile number you are using in WhatsApp mobile number, so you can put the same number here. Then the number of siblings you have in the family, you can write it here.
and then you can type here the permanent address section. In the permanent address section, you have to write the address line, your details of the house number and etc. State, city, village, town, and the district pin code here. If your permanent address and the correspondent address is same, so you can simply click on the checkbox same as permanent address and click on save and continue button. Now coming to the most important section of the application form here, this section captures your education detail. From this present class drop down list, you need to check your present class. Say for example, if you are studying in class 4, so this will give you two options, your previous class and your current class. Here in the previous class, it is asking in your class, state, district, name of the institution, and marking type. Whatever is the marking type, you can fill the marks here. And in the present class section, it is asking you for the name of the institution where you are studying currently and the total annual fee. Please note, you have to enter here the entire fee amount of your institution for that particular academic year. After filling onto these details, you need to click on the save and continue button and go to the next section, which is a family members section. Here you need to add your family members detail as it is already filled. So it is showing me the details of father and mother. If it is a case of a guardian, so you can also enter the details of the guardian here by typing the name, mobile number, annual income of the relative, relation, and qualification of your father and the occupation. Coming to the next section, it is a document section. Please note here that you have to make sure that the document is into the PDF or into the JPEG format and should not exceed the file size of 1 MB. So these are the two acceptable format of the document here. So please check while filling up the application form, you have these document in the format. The document here, I'll read it out one by one. Contract copy, income proof, employee ID card, any one of that. And that is required for the cab driver's profile if they do not possess a commercial driving license. Passport size photograph, academic year proof or a school fee receipt for the particular academic year, that is 2022 and 23. Your domicile proof, since we have this application majorly for 4 states, so address proof, domicile proof, residential certificate. Identity proof, Aadhaar card. Please make sure that you are uploading the front and back, both sides of the Aadhaar card. Student ID proof, family income proof, and under the family income proof, these are the documents which are acceptable. Commercial driving license, again, please ensure that you are uploading a front and back both, previous class mark sheet or a promotion letter, and bank passbook. After uploading these documents, you can click on save and continue button and move ahead to the next section. Here we are capturing the bank account details. So you need to write your own bank account detail in case you are an adult, and in case you are a minor, you have to upload the bank account details of your parent, father or mother. This section is again a very important section. This section called as more about yourself. Here we are capturing few details related to the profile, and this section help the committee to understand the profile need, and we will analyze the profile basis on these questions. So these are the questions. Tell us about something yourself, your family. Tell us about your career aspiration, how this scholarship will help you. Please share your personal professional achievement. Select the small commercial vehicle LMV which your father is driving. So you need to select here. Then enter the commercial driving license number. From where did you get to hear about the scholarship? Few more questions related to disability. And after filling all these sections, you need to click on this save and submit button. So first of all, it is our great pleasure to announce this scholarship project for the children of drivers. Mahindra Finance is very committed to this community as there are important stakeholders. Now you will ask me, why scholarship project? So it's a very, very special project for Mahindra Finance, because when we were doing all our needs assessment studies and we were interacting with drivers, the thing came very prominently from the drivers community that they don't want their children to continue as drivers.
because driving is a profession which has a lot of hardships, which has a lot of challenges, and the aspirations of these drivers are huge. They want their children to study further, because there's also a perception that those who are not studied much, okay, they continue to be drivers, or they choose driving as a profession, and hence there is very less dignity and respect to this profession. And therefore Right. many drivers wanted that their children should not be drivers, and hence this scholarship program has stemmed from that request from the drivers to enable the higher studies of their children. Now, financial constraint, it was a major constraint in pursuing the education, because you will all know that the income bracket of drivers is not very high, and sometimes the drivers do feel the pressure to continue the education of their children. So the objective of this program is to reduce the financial burden of the family, of the driver's family, and enable their children to pursue higher education. I like to say that students make most of this. This is a very rare opportunity. You are getting additional support, which will help reduce the financial burden on your family, and it will help to fuel your own dreams. Right? So just take the advantage, fill the form correctly. Please check before all the details before you submit. And let's hope for the best. All the very best to you. सो आई होप सभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना एंड ऑल. तो अगर तो भी अभी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना. एंड जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जिनके ये वीडियो काम आ सके, फैमिली मेंबर हो गए, फ्रेंड्स लोग हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, उनके साथ जरूर से शेयर करना. एंड हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर लो. हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, जितनी भी स्कॉलरशिप एंड अदर रिलेटेड कॉन्टेंट आता है, तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा. तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए. बाय बाय.